ओम शांति। Om Shanti. बाबा से तो आप सभी को पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। आप सभी प्रवृत्ति में रहते Chacun de vous devrait recevoir un certificat que vous passez avec honneur de Baba et de la famille. Il y a tant de vous qui avez commencé à travailler là-dessus. तो भी आप शाम को समय निकाल के बैठते हैं, बहुत ध्यान से Et सुनते donc, हैं, toutes les activités ont déjà बैठते recommencé, हैं, mais vous prenez le temps de vous asseoir le soir et d'être मनोरंजन करते présent हैं, aux classes. Et अभ्यास pendant करते हैं। toute la journée, vous baratez तो et vous बाबा को आप pratiquez लोगों aussi. को Alors, न केवल अच्छे बच्चे Baba, हैं, सपूत बच्चे, पर बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं आप लोग। vous n'êtes pas seulement तो des समय का enfants रंग ही dignes, ऐसा है mais vous êtes aussi des étudiants et le temps जो अगर ये सब est नहीं tel करेंगे तो कहीं न कहीं मन, बुद्धि que si nous n'avions pas fait toutes वातावरण ces choses, शांति alors l'esprit, l'intellect seraient कहीं न कहीं impliqués समस्या dans toutes पैदा sortes de होगी। conversations ou dans l'atmosphère. तो कितना अच्छा D'une façon ou मनोरंजन d'une मिलता है autre, ना, आनंद मिलता है ना शाम को। l'esprit, l'intellect demeurent मेरे occupés, को n'est-ce तो pas? C'est बहुत très अच्छा bon, लगता है क्योंकि जब भी spécialement समय lorsque nous निकलता voyons है les मुझे तो scènes. अपना आज ये अभ्यास करना है, मुझे तो मनोरंजन Cependant, करना है, quoi तो qu'il बहुत arrive, je me बढ़िया dis, लगता ah, है। je dois faire mes devoirs, je dois faire ma pratique, je dois vraiment स्कूल में barater बच्चों का होमवर्क et भी मिल रहा aussi है। regarder mon bilan du souvenir. एक तो Donc, अच्छा c'est है कि le अच्छे même बच्चे travail que हैं si nous étions à और अपने आप l'école. को समझे करें, C'est bien pendant le बच्चे jour डेली que si होमवर्क vous êtes देते capable हैं d'étudier, इसलिए de comprendre aussi बिजी भी रहें, le travail, le devoir est नींद भी donné pour अच्छी une autre आए, खेलने occasion, c'est कूदे pour रहना rester चाहिए occupé aussi, parce que sinon, तो pendant toute la बुद्धि भी journée, है तो vous, बुद्धि भी ऐसी vous चले iriez jouer ou danser. फिर और नहीं होगा Donc, तो वही बात l'intellect aussi होगी। fonctionne de la même façon. S'il n'y a तो rien जितने d'autre à भी इसमें faire, रिपीट करेंगे, बात rien qui करेंगे, arrive, alors on va परंतु répéter des बाबा ने जिन choses बच्चों को qui ne sont pas ऐसा nécessairement मनोरंजन के utiles. लिए अभ्यास दिया है, उसका रियली बहुत बहुत लाभ है। Baba nous a मैं donné अपना भी la अनुभव pratique सुनाती हूँ। et nous en retirons tant मेरे de भी परिवार bénéfices. में व्यवस्था Et में même moi-même, j'en कई ai बातों में beaucoup संकट पड़ता retiré, है, même si je suis occupée dans mes जितना activités ou ज़रूरी है dans रखना d'autres वो तो ठीक pensées. है, पर उससे जो ज़्यादा Mais tout सोचते ce हैं, qui est nécessaire à penser, nous le faisons, mais nous n'avons pas ऐसे ही besoin de बोलना है, penser encore समरी में ज़रूर plus. बोलना चाहिए। De la même façon, parler, nous disons ce que nous avons à और dire, बोलने में तो बहुत mais ne सारी बातें pas, रखनी है, राइट? mais ne pas parler कोई plus. Mais भी dans la व्यवस्था parole, हो, nous devons porter aussi beaucoup d'attention, चाहे tout जैसे ce que कोई nous आप घर में voyons होंगे, कोई बात tout पूछेंगे, autour. बाहर थोड़ी बताएँगे। ऐसे ही कभी Même si vous कभी êtes à la कुछ भी maison, होता है, si quelque chose arrive à la तो maison हमको उसका वर्णन बाहर et vous करना allez à है। l'extérieur, c'est la même chose बाबा dans le अपने yoga. Si बच्चों को quelque chose बहुत ही arrive, सपूत बच्चे नहीं कहता था। हमने तो कभी भी अपने मुँह से हमारा परिवार है ये, ईश्वरी परिवार है, donc अलौकिक c'est परिवार notre है। famille, nous कभी respectons notre कभी famille, अलौकिक परिवार c'est से notre कभी famille कभी spirituelle, notre famille alokik. Alors, लौकिक लोग कहते हैं पर अपने pourquoi est-ce que je प्रिय parlerais de परिवार cette से famille à l'extérieur? उसका बहुत Donc, ध्यान रखना पड़ता है। nous ne parlons एक बार pas de ऐसे notre आके famille. कहा Pourquoi parlerions-nous de बाबा notre famille कि एक divine? बार Alors, il faut ऐसी ही être बात है, très बाहर prudent. निकलते हो तो सारे ब्राह्मण कुल का नाम Eh bien, si गुणगान करते हो, quelque chose arrive après तो अच्छी avec दृष्टि une आती है। paramine तो देखो कितनी et que vous en श्रद्धा parlez à है l'extérieur, बाबा के c'est comme si बारे vous में। diffamiez tout le clan brahmine. बाबा ने गोद में Et लिया है chacun तो de उसकी nous est devenu पवित्रता की, l'enfant de Baba. Baba बाबा को पतित पावन nous a किया है। amenés कभी dans सोचा son भी नहीं giron, था c'est à कि cause de la ऐसे जीवन pureté. होगी। Nous जितने n'avons भी même लोग jamais हैं तो pensé एक que भी nous कारण नहीं है, aurions une telle vie. लेकिन Il सब n'y a कुछ aucun अच्छे vice, लिए, ce n'est que हमारी de la दृष्टि इतनी pureté. शुद्ध है, होनी चाहिए, Et aussi, notre attitude est tellement pure. जिसमें न मोह का अंश हो, न लोभ का हो, Donc, il n'y a और aucune एक trace नया होमवर्क मिलता है d'attachement मुरली का qui a été créé. कि देखो Et बार-बार मुझे ce जांचना है, nouveau devoir que nous commençons pour le Murli, encore et encore, je तब dois हमें वो vérifier où बंधन mon intellect va. और पता चलता है, ऐसे नहीं कि Parce que केवल si mon intellect se ज्ञानी dirige toujours à la même place, c'est comme s'il y avait जिनकी un बुद्धि lien. तो कर्मातीत बन गया है,
Si, si, si l'intellect ne va plus nulle part, ça veut dire que vous allez devenir karmatite. Plus nous allons vérifier, plus nous allons nous en apercevoir. Que ce soit une situation, même pour une personne, combien de temps est-ce que je pense à cette personne? Combien de temps est-ce que mon intellect a été occupé envers cette personne? Donc, c'est aussi un lien et ça devient des pensées perdues. Par exemple, tant de fois, il y en a beaucoup qui vont dans le gaspillage pour toutes sortes de raisons. Et lorsque mes pensées vont dans le gaspillage, donc nos pensées devraient être déterminées que nos pensées aillent vers Baba. De n'importe quelle façon, nous devons devenir libres des désirs. Donc, lorsque nous sommes libres des désirs, nous nous assoyons et nous pouvons ressentir le courant de Baba. Le feu volcanique doit être tel que tous nos sanskars seront brûlés. Et ce ne pourra être ce genre de volcanique seulement lorsque nous avons cette attitude qu'il n'y a aucun désir. Baba nous a donné ce titre d'être Raj Rishi et les rishis, spécialement dans le royaume, ils deviennent très détachés. Ils ne se préoccupent pas de ce qui arrive dans le royaume et ils donnent leur avis seulement on leur demande. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibles. Même tout en vivant dans une maison, nous devons avoir beaucoup d'amour les uns pour les autres. Mais il ne devrait y avoir aucun lien, l'attitude de à moi. Nous avons eu tant de relations à travers toutes nos vies, mais il y a eu aussi de douleurs, de souffrances. Et lorsque les tests de papier viennent, il n'y a qu'à ce moment-là que nous savons vraiment combien il y a d'attachement. C'est pour cela que le temps est tel que la pureté. Donc, le bonheur que quelqu'un ressent à propos de la pureté, nous l'appelons la joie au-delà des sens. Et c'est comme lorsque nous sommes vraiment heureux à l'intérieur. Il y a de la paix aussi. Il y a de l'amour. Alors, la pureté, le bonheur qui vient de la pureté, la paix que nous recevons de la pureté et aussi l'amour spirituel. Et en même temps, nous avons ce bonheur. Alors aujourd'hui, lorsque nous parlons de bonheur, alors chacun de vous, demandez-vous demandez à votre esprit, parce que nous avons renoncé à tant de grandes choses. Quel est le bienfait que nous avons renoncé à tant de choses? Donc, nous restons paisibles, nous restons détachés, nous avons tant d'amour pour chacun. Et nous sommes aussi heureux parce que lorsqu'il y a du bonheur à l'intérieur de soi, alors les autres en retirent beaucoup de pouvoir. Alors, lorsque vous demeurez avec votre famille ou avec quelqu'un, donc vous pouvez avoir une attitude d'amour avec eux, mais aussi mais c'est le souvenir qui est important. Aujourd'hui, Baba a dit, ayez ce passe-temps que d'une part, il y a quand ce sont des habitudes, ce n'est pas bon, mais lorsque ce sont
des passe-temps, c'est bien. Donc, d'avoir le passe-temps du souvenir. Baba a utilisé tant de points de connaissance. Il est notre parent, notre mère, notre père, il est notre professeur suprême et notre gourou suprême. Et avec toutes ces relations, Baba prend soin de nous dans chacune de ces relations aujourd'hui. Om Shanti.